गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जापान साउथ कोरिया समिट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की है अभी रिसेंटली। 12 सालों में पहली बार ये मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा है कि अब हम रेगुलर विजिट्स जो हैं वो किया करेंगे। तो अब आपको पता होगा, अगर इनका इतिहास देखोगे आप तो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहा है। जापान ने कोरियन पेनिनसुला को 1910 से लेकर 1945 तक जो है वो कॉलोनाइज़ किया था। जापान ने बहुत सारे जो है कोरियंस को फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन में जो है वो इंडल्ज करवाया। लेकिन 1965 में $800 मिलियन जो है साउथ कोरियन जो है गवर्नमेंट को जापान ने पे किए, जो कि कहा गया कि वो उतने इनफ नहीं थे। फिर अब जो ये कंसेशंस दिए जा रहे हैं, अब जो ये एक तरह से मीटिंग्स की जा रही हैं, क्या साउथ कोरियन पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी, ये भी देखना बाकी है। अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में लॉन्ग टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है। इसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से ही 2012 में जब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट इन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स पर गए, तो जापान ने जो है रेगुलर विजिट्स जो है वो बंद कर दी। ठीक है, तो अब जो है टेंशन्स और भी बढ़ी थी पिछले 10 साल में। जापान में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आई और उन्होंने अपनी कंट्री को रीआर्म करने को कहा, जिससे कि जो है जापान की जो वॉर टाइम एट्रोसिटीज़ है उसको वाइट वॉश करने का प्रयास किया गया। 2018 में साउथ कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने जापान के निप्पॉन स्टील और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ को कहा कि वो इन लेबर विक्टिम्स को जो है वो फोर्स लेबर विक्टिम्स को कंपनसेट करे। 2019 में इन रिस्पॉन्स टू दैट जापान ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए ऑन केमिकल्स, जो कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। तो टेंशन्स रही हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, रादर पूरे कोरिया के बीच में और जापान के बीच में। लेकिन फिर भी जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि इन टेंशन्स को कम किया जा सके। क्यों ये प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। दोनों कंट्रीज़ की शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। दोनों कंट्री यूएस के एलाइज हैं। दोनों कंट्रीज़ जो है यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फिलीपींस, इनके साथ जो है डिफेंस टाइज जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो इंडो पैसिफिक में जो दो बिगेस्ट थ्रेट्स हैं, चाइना और नॉर्थ कोरिया, उनके अगेंस्ट इनको इकट्ठा आना ज़रूरी हो रहा है। साउथ कोरिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का थ्रेट आता रहता है। नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स बढ़ाता जा रहा है। तो साउथ कोरिया को वैसे भी जो है जापान की ज़रूरत है, अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें, क्योंकि इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में जो है डिस्रप्शंस आई जब से चाइना के थ्रू, तब से साउथ कोरिया को लग रहा है कि जापान के साथ उसको जो है अपनी एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाना ज़रूरी है। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट अच्छी है, क्योंकि दोनों ही हम जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं हमारे लिए, जापान और साउथ कोरिया। इनके पास सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है। एशिया पैसिफिक रीजन में भी अगर हम स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी हमारे लिए ये दोनों कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कैपिटल एक्विजिशन ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड मिलिट्री हार्डवेयर लगभग 70,000 करोड़ का उसको अप्रूवल दे दिया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की फॉर प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन में इसको 2001 में जो है बनाया गया था। डिफेंस मिनिस्टर जो है सॉरी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन जो 2001 में थी, उसी के बेसिस पर इसको भी रिसेंटली बनाया गया था। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के मेंबर्स होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस आपको पता है, 15 साल का जो लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान है डिफेंस फोर्सेस का, उसको अप्रूवल देना। जो भी एक्विजिशंस करनी है उसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देना। कैटेगराइज करना किसी भी प्रपोजल को बाय एंड मेक कैटेगरी में या मेक कैटेगरी में, जिसके अंदर जो है आप जो भी एक्विजिशन करते हो वो डिफाइन करना कि हम इसको बाय करेंगे, हम इसको बाय करेंगे और मेक भी करेंगे, या फिर इसको सिर्फ हम मेक करेंगे। ठीक है। सिंगल वेंडर क्लियरेंस, मतलब कोई अगर एक्विजिशन हो रही है किसी डिफेंस के जो है इक्विपमेंट की, अगर उसमें सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही कंपनी उसको बनाने वाली है, तो उसको क्लियरेंस देना या नहीं देना, इसका काम भी डीएसी ही करता है। फिर ऑफसेट प्रोविजंस। ऑफसेट प्रोविजंस क्या होते हैं कि 300 करोड़ से ऊपर का अगर आप कोई जो है एक्विजिशन कर रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी को कहोगे कि आप भी हमारे से कुछ, समझ लो 20% या 30% जो है वो आप हमसे, इंडिया से भी कुछ खरीदो, और तभी हम आपसे खरीदेंगे। ठीक है। तो
ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए डिसीजंस जो होते हैं वो भी यही डीएसी लेता है। तो मतलब एक तरह से जो भी डिफेंस की प्रोक्योरमेंट होती है उससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो डीएसी ही लेती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जोजिला पास। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली स्ट्रेटजिक जोजिला पास पर जो है वो स्ट्रेटजिक जोजिला पास को ओपन करने का जो है वो डिसीजन लिया है बिटवीन लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज। तो जोजिला पास जो है उसको हम माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स भी कहते हैं। ये कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करता है और ये लोकेटेड कहाँ पर है? श्रीनगर कारगिल लेह के हाईवे पर। लगभग हाफ ऑफ द ईयर ये बंद ही रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। और ये साइट रहा है इंडो पाकिस्तान वॉर की 1947-48 में, जब ऑपरेशन बिसन चलाकर इंडियन आर्मी ने इसको कैप्चर किया था। अब जोजिला टनल क्या है? जोजिला टनल एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है जो कि लगभग 12,000 फीट, 11,500 12,000 फीट के आसपास जो है वो बनाई जा रही है श्रीनगर लेह हाईवे पर। ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी श्रीनगर और लेह के बीच में ये। इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है और एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैपा फाइकस अल्वारेजी। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट जो है वो एक सीवीड पार्क बनाने जा रही है तमिलनाडु में। लेकिन कंसर्न्स क्या हैं कि ये जो कापा फिकस अल्वारेजी जो ये सीवीड है ये एक इन्वेजिव सीवीड है। इसका इम्पैक्ट जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क पर बुरा होगा। ठीक है, तो ये सीवीड के बारे में देखते हैं हम। ये नेटिव है इंडो पैसिफिक रीजन को। IUCN कहता है कि वर्ल्ड के जो 100 मोस्ट इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं उनमें से ये एक है। प्राइम थ्रेट्स रहा है ये। जो भी कोरल्स होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो अब हम देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल मरीन नेशनल पार्क है क्या। ये वन ऑफ द बायोलॉजिकली रिचेस्ट कोस्टल रीजन्स ऑफ मेनलैंड इंडिया है। गल्फ ऑफ मन्नार रीजन जो है उसके अलावा मतलब उसके अलावा 3 और जो है एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पर कोरल रीफ्स मिलते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसको हमने बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर किया हुआ है। टोटल यहाँ पर 21 आइलैंड चेन्स थी लेकिन उसमें से 2 जो है वो सबमर्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेप्टाइड्स। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम IASST गुवाहाटी जो है उन्होंने कहा है कि पेप्टाइड्स जो कि स्नेक वेनम से जो है रिट्रीव किए जा सकते हैं वो प्रोग्रेशन ऑफ पार्किंसंस डिसीज़ को रोक सकते हैं। ठीक है, तो 2 ऐसे उन्होंने कस्टम पेप्टाइड्स जो हैं वो देखे हैं TNP और HNP नाम के, जो कि स्नेक वेनम से इंस्पायर्ड हैं। और ये ह्यूमन TR की रिसेप्टर्स जो है सेल्स पे उस पर जाके बाइंड करते हैं और जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है उसकी सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी को बढ़ाते हैं जो कि पार्किंसन डिसीज़ में दी जाती है। ठीक है, पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स जो हैं आपके नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं जो कि आपको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स या अदर सब्सटेंसेस के थ्रू जो है वो दिए जाते हैं। पेप्टाइड्स जो हैं उनको हम प्रोटीन से बेस्ड ऑन साइज़ हम सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर हम टाइप ऑफ पेप्टाइड्स देखें तो मिल्क पेप्टाइड्स भी होते हैं, जैसे कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मिल्क प्रोटीन कॉल्ड कैसीन को जब ब्रेक करता है तब मिल्क पेप्टाइड्स बनते हैं। पेप्टोन्स अगर हम देखें तो प्रोटियोलिसिस ऑफ एनिमल मिल्क और मीट के थ्रू ये बनते हैं। राइबोसोमल पेप्टाइड्स ये आपके ट्रांसलेशन प्रोसीजर से बनते हैं। ट्रांसलेशन प्रोसीजर क्या होता है? जिसमें सेलुलर राइबोसोम्स कुछ प्रोटीन बनाते हैं ऑफ mRNA, उसको हम राइबोसोमल पेप्टाइड्स कहते हैं। अब पेप्टाइड्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? मोस्टली कॉस्मेटिक्स में, जैसे कि एंटी एजिंग क्रीम्स बनाना, स्किन से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करना। इवन इनका इस्तेमाल जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट्स की। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम उसके अंदर 40 एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है। इस स्कीम ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम असाइड को जो है वो रिप्लेस किया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का है कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। अब इसमें एलिजिबिलिटी किस किस की होती है, किस किस को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है? सेंट्रल स्टेट एजेंसीज़ को, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स, सेज अथॉरिटीज़, एपेक्स ट्रेड बॉडीज़, इन सबको जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर ग्रांट्स इन एड दी जाती है।
अब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है और ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए 2017-18 से स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी। चेन्नई बेस्ड, ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक इनिशिएटिव लेकर आई है जिसमें पोर्टेबल वाटर दिया जाएगा 6 आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप को यूजिंग एलटीडीडी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी एलटीडीडी टेक्नोलॉजी क्या है? अब सिंपल से अगर हम भाषा में समझें तो वार्म सरफेस जो सी वाटर है उसको फ्लैश लेवल मतलब बहुत ही तेज़ी से इवेपोरेट करवाया जाता है लो प्रेशर पर, और उसका जो वेपर है फिर उसको ठंडे जो है सी वाटर से कंडेंस करवाया जाता है ताकि सॉल्ट्स जो है वो पीछे रह जाए और जो है वो जो पानी है वो फ्रेश पानी आपको सी में से मिल सके। इसके लिए कोई केमिकल प्री या पोस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सॉल्टी सरफेस वाटर जो है एक टैंक में जो है कलेक्ट किया जाता है और उसको हाई प्रेशर से दिया जाता है। जब हाई प्रेशर दिया जाएगा तो ये प्रेशराइज वाटर वेपराइज हो जाता है, ट्यूब्स में जाकर ट्रैप हो जाता है, एक चैम्बर में ट्रैप हो जाता है। फिर ऊपर से कोल्ड वाटर जो है वो सर जो आपके ओशन डेप्थ्स का निकाल कर वो प्लम्बिंग के थ्रू डाला जाता है इन ट्यूब्स या चैम्बर्स के ऊपर। फिर जो वेपर है वो कंडेंस होता है और वो फ्रेश वाटर में जो है कन्वर्ट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो अपना पीछे रह जाता है। ठीक है, तो लगभग इस टेक्निक से 1 लाख लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर हर साल दिया जाता है यूजिंग डीजल जनरेटर सेट्स। ठीक है, क्योंकि और कोई सोर्स तो है नहीं है इस लक्षद्वीप आइलैंड में, तो डीजल जनरेटर के ही सेट्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो ऑफ कोर्स लगभग 5 डिसैलिनेशन प्लांट्स यहाँ पर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स में। अगर हम देखें तो ये 10th जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। क्या आरओ वाटर जो है वो हम देखते हैं कि क्या आरओ वाटर जो है वो गुड फॉर हेल्थ होता है? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कंसर्न क्या है डिसैलिनेशन से भी आरओ से भी, कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम या कार्बोनेट जिनको हम टीडीएस भी कहते हैं, आरओ जो है वो इनको भी जो है वो निकाल देता है पानी से, पानी को बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है, जिसकी वजह से जो एसेंशियल मिनरल्स है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं जाते हैं। लेकिन अब जो है पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस आ चुका है बहुत सारे आरओ प्लांट्स में। आरओ हमारे जो हमारे घर पे भी आते हैं उनमें भी अब जो है पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस आ चुका है जिसमें एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं वो पानी में वापस डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखें 1993 में इसको ऑटोनोमस सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज बनाया गया ताकि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस दे सके नॉन लिविंग और लिविंग रिसोर्सेज ऑफ कौन से एरिया, इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? चेन्नई में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी ने पहला ऑर्डर दिया है इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम्स का मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए, जो कि एक इंडियन स्टार्टअप बनाएगा। ठीक है, पहली बार ये प्रोक्योरमेंट जो है वो आईडेक्स प्रोजेक्ट से की जा रही है इंडियन आर्मी के लिए। एक स्टार्टअप जो है वो इतना बड़ा सप्लाई जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस को देने वाला है। अब ये इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम्स होते क्या हैं? तो आपको पता है जैसे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स जो है वो आपके आर्मी के जब मूव हो रहे होते हैं तो उसको ब्लेंड कर देना, ये कैमोफ्लेज सिस्टम, कैमोफ्लेज मतलब छुपाना। तो टेरे जो जो टेरेन का बैकग्राउंड है उसके साथ ब्लेंड कर देना उसको, और उसकी विजुअल, थर्मल, इंफ्रारेड या फिर रडार सिग्नेचर्स को जो है वो कम करना या कंट्रोल करना, ताकि जो एनिमी है वो डिटेक्ट ना कर पाए कि ये आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स आ रहे हैं। उसके लिए ये इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम डिफेंस एक्सीलेंस प्रोजेक्ट देखें, आईडेक्स प्रोजेक्ट देखें, तो ये अप्रैल 2018 में इसको लॉन्च किया गया था सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए, जिसमें कि हमारी डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो है एमएसएमई, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स जो काम कर रहे हैं उनको फंडिंग दी जाती है। और इसको कौन फंडिंग देता है और मैनेज कौन करता है? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Japan-South Korea summit. This topic is important for your international relations. Recently, South Korean president has met a Japanese prime minister in Tokyo
and this meeting has come after almost 12 years. Both sides have agreed that they will resume regular visits between the two countries, and they will take steps to resolve the trade disputes. So, what is the history between Japan and South Korea? South Korea was, of course, South Korea is currently also a part of Korean Peninsula, and Japan colonized this Korean Peninsula between 1910 and 1945. Japanese forces, Japan forced many of these Korean people into forced labor or forced prostitution, and these victims were paid $800 million in reparations in 1965, but it was never distributed to the victims. Also, even if we look at the current state of normalization of ties, the South Korean public may or may not even accept this reconciliation because of long-standing disharmony between the two countries. There is, apart from that, there is also long-standing territorial dispute. If we look at it, then in 2012, what happened is that when the South Korean president visited these territorially disputed islands, then of course the relations went sour again, and tensions also escalated after 10 years when Japanese government started moving to rearm their country. South Korea's Supreme Court in 2018 ordered the Japanese Nippon Steel and Mitsubishi Heavy Industries to compensate forced labor victims. Similarly, in reply to that, in 2019, Japan placed export controls on chemicals which are used to make semiconductors and display manufacturing. Then, what is the significance of this summit? Of course, both countries have shared security concerns vis-a-vis North Korea and China. So that's why both of them want to bolster their defense ties with UK, Australia, India, and Philippines. If we look at South Korea, then of course they have this concern of North Korea, and not just strategic concerns, but South Korea has seen that there was supply chain disruptions during COVID, so they cannot totally rely on China. That's why they want to diversify their uh, supplies chains to Japan also, which is nearby them. For India, if we look at it, then it's a good news for us because both of these countries are largest trading partners of Asia, of India in Asia, and they have significant technological expertise to help us in our Make in India initiative. So the next topic is Defense Acquisition Council. This topic is important for your security section. So Defense Acquisition Council has recently approved the capital acquisition of indigenously developed military hardware worth almost 70,000 crores. So DAC is the highest decision-making body of the Defense Ministry on procurement, and it was formed after the GOM recommendation on uh, GOM recommendations of the on reforming the national security system in 2001 after the Kargil war. So it was formed later on when, and it now it consists of the defense minister as the chairperson, chief of defense staff, chiefs of army, navy, air force, and even coast guard as its members. Okay, so it functions. It's, if we look at its functions, then it gives in principle approval to the 15 years long-term integrated perspective plan for defense forces. It also gives acceptance of necessity for capital acquisition proposals. It also categorizes the projects which are required to for acquisition, like if they are buy and make category or make category. It also looks into issues with respect to single vendor clearance. If there is an issue of offset provisions, for example, when you are procuring from any item from abroad, which is more than 300 crore rupees, then you ask that particular company that you should also procure some percentage of this deal from India. So this is what we call offset provision. All decisions related to transfer of technology under the buy and make category of acquisition proposals are also taken by the DAC. So the next topic is Zojila Pass. This topic is important for your economy section. So Border Roads Organization has recently opened the strategic Zojila Pass, which connects with the Union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir. Zojila Pass is also known as the Mountain Pass of Blizzards, and it connects Kashmir Valley to Ladakh. So it is located on the Srinagar-Kargil-Leh highway at a height of almost 11,650 feet. So it remains closed for almost half of the year due to heavy snowfall,
and it has been the site of Indo-Pakistan War also. And during that period, Operation Bison was launched by Indian Army, and it was captured in November 1948. So, what is then Zojila Tunnel? It is an under construction tunnel which is located at an altitude of almost 11,578 feet, and it will provide Srinagar Leh Highway all weather connectivity. Okay, so and it is called the India's longest road tunnel, and it is also the longest bi-directional tunnel of Asia. So its total length is almost 14.15 kilometers, this which is very long, of course. So the next topic is Kappa Ficus alvarezi. This topic is important for your environment section. So government is planning to have a seaweed park in Tamil Nadu, despite the threats that are being highlighted with respect to Kappa Ficus alvarezi, which is an invasive seaweed, and it can pose serious threats to the Gulf of Mannar Marine National Park region and the state's coastline also. So what is this seaweed? It's an invasive seaweed which is native to Indo-Pacific region. IUCN has categorized it as one of the world's 100 most invasive species, and it has also already killed the corals near Kurusodai when it was deliberately introduced in Ramananthapuram area about 2 decades ago. Since the government is not learning from that experience. So, anyways, what is the Gulf of Mannar Marine National Park? It is one of the biologically richest coastal regions of the mainland India. In India, apart from Gulf of Mannar region of Tamil Nadu, Gulf of Kutch of Gujarat, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands are one of the four major coral reef areas in the country. This Marine National Park of Gulf of Mannar has been categorized as Biosphere Reserve also. It consists of a chain of 21 islands, and 2 islands have already been submerged. So the next topic is peptides. This topic is important for your science and tech section. Recently, researchers from IASST Guwahati have revealed that they have found peptides derived from snake venom, and it can impede the progression of Parkinson's disease. How? So these two custom peptides, TNP and HNP, they are inspired by snake venom, and they have the capacity to selectively bind to human TRK receptors of nerve cells, which would help in improving the selectivity and specificity of the drug molecules which will be given for Parkinson disease patients. So what are peptides? They are naturally occurring amino acids, and they include many antibiotics, hormones, and other substances which are involved in the biological functioning of living beings. These peptides are separated from proteins based on their size. Protein are comprised of multiple polypeptides, whereas these peptides are singular in character. So what are the different types of peptides? So milk peptide, of course, it is formed when the digestive system of humans break a milk protein called casein. These peptones are formed when the proteolysis of animal milk or meat happens. Ribosomal peptides occur when they are produced when the translation of mRNA occurs. Translation is a process in which the cellular ribosomes create proteins. So, what are the applications of these peptides? So, they are used in many anti-aging creams. They are even used in the treatment of skin which has been injured by sun damage or acne. They are also used as artificial sweeteners. So the next topic is trade infrastructure for export scheme. This topic is important for your economy section. So recently, Union Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry has informed the Parliament that TIES scheme has given a financial assistance of to almost 40 export infrastructure projects between 2019 and 2023. This scheme has replaced a centrally sponsored scheme called ASIDE, and the objective of this scheme is to enhance export competitiveness by bridging the export gaps in the export infrastructure. So central and state agencies, export promotion councils, commodities boards, sales authorities, apex trade bodies, etc., all are eligible for financial support under this scheme, which is given in the form of grants in aid. So this scheme is being implemented by the Department of Commerce since financial year 2017 and 18.
So the next topic is low temperature thermal desalination technology. This topic is important for your science and tech section. So Chennai-based National Institute of Ocean Technology is working on making an ongoing initiative of providing portable water in 6 islands of Lakshadweep using LTTD technology. So what is LTTD technology? So if we look at it in the very rudimentary terms, then warm surface seawater is flash evaporated, which means that it is evaporated at a very fast rate at low pressure, and then this vapor is condensed with this vapor that is formed after evaporation is condensed with cold deep seawater. So LTTD technology does not require any chemical pre and post treatment of seawater. So the pollution problems are minimal and it is suitable for island territories. So what happens here is that salty surface water is collected in a tank and it is subjected to high pressure, and then this pressurized water vaporizes and it creates of course a low pressure, and it gets trapped in a tube or a chamber. Then what happens is that the cold water is plumbed from the ocean depths and it is passed over these tubes. When this passes over these tubes, then the vapor inside these tanks or chambers condenses the vapor into fresh water and the salt is diverted away. So using this technology, at least 10,000, I'm sorry, 1 lakh liters of potable water is provided to this area of Lakshadweep Islands every day. And currently they are having 5 desalination plants in the Lakshadweep Islands, and this will be the 10th one under construction. So the next topic is let us also see what is the issue with RO water or these desalination water. So what happens is that when you are desalinating this water or when you are using RO technique, or even the essential minerals like calcium, magnesium, zinc, sodium gets removed from water. So most RO plants now have the technology to go undergo a post treatment process whereby salts are then added back to make up for the loss that happens after during the RO procedure. So this even is being done at your home ROs, whereby they add certain important minerals back to the water so that it is not devoid of total minerals. What is National Institute of Ocean Technology? It was established in 1993 under the Ministry of Earth Sciences as an autonomous society, and it provides reliable indigenous technologies to solve various engineering problems. And uh, it is done to access the non-living and living resources of the exclusive economic zones of the country. So it is headquartered in Chennai. So the next topic is integrated mobile camouflage systems. This topic is important for your security section. Indian Army has recently placed its first order for integrated mobile camouflage systems for mechanized forces from an Indian startup for the first time. So this is the first time a procurement order of such a high number is being made from the IDEX project by the Indian Army. So what are these integrated mobile camouflage systems? So when Indian Army or any defense forces basically moving the armored fighting vehicles, they want it not to be tracked, okay, or not to be visible on the radar. So what they would do is this integrated mobile camouflage systems would allow these armored fighting vehicles to blend in with their terrain background, and it also reduces the signature given by the visual, thermal, infrared and radar signatures, and thereby it helps these armored fighting vehicles to camouflage or hide themselves. Okay, so what is this defense excellence project of IDEX project? It was launched in April 2018, and it aims to it aims to ensure that India has self-reliance in the defense manufacturing. So it is involving defense industries, including the MSMEs, startups, individual innovators, etc., by funding and managing their projects, which is being done by Defense Innovation Organization of the Ministry of Defense. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.